वेलकम, आई एम डॉक्टर श्वेता और दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ लेज़र एमसीक्यूज। और ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है लेज़र एमसीक्यूज पे। और ये मुझे इसलिए बनाना हो रहा है क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए और कमेंट्स में भी आया कि लेज़र की मोर एमसीक्यूज चाहिए। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी मेरे पास मैसेज आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि उसके लिए भी आपको मोर एमसीक्यूज चाहिए। तो लेज़र के 2 वीडियोस लेक्चर हम बनाएंगे एमसीक्यूज के इसके बाद। तो उसके बाद फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स के और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और आप मुझे कमेंट में टॉपिक लिख सकते हैं किन किन टॉपिक्स पे या किन किन पेपर्स पे आपको मोर एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और हम किस तरीके के एमसीक्यूज और डिस्कस करें। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज करिए क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब मैं देखती हूँ कि व्यूज हो रहे हैं और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ लेजर एमसीक्यूज. Let's start first question. Einstein in 1917 theoretically proved the existence of spontaneous emission, stimulated emission, non-radiative transition, thermal emission. So Einstein in 1917 theoretically proved the existence of stimulated emission. That is B option is the correct option. Next question is, the first laser discovered by Meyman was helium neon laser, ruby laser, CO2 laser, ND-YAD लेजर. ये हम पहले भी क्विज में डिस्कस कर सके हैं. मीमैन डिस्कवर्ड फर्स्ट रूबी लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर, दैट इज रूबी लेजर. बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ऑफ पल्स लेजर इज रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, नाइट्रोजन लेजर, आर्गन ion laser. So ruby laser is the correct option. Ruby laser is a pulse laser. Now next question is, emission of photon assist by an extrusion photon of proper frequency is called spontaneous emission, stimulated emission, stimulated absorption, none of the above. Exterior photon of proper frequency emission, that is stimulated emission. B option is the correct option. Induced emission is known as stimulated emission. Next question is, Boltzmann law gives the density of population inversion of various level in thermodynamical equilibrium, thermal inequilibrium, both B and C. So option B is the correct option. Boltzmann law gives the density of population at various level at thermal equilibrium. B option is the correct option. Next question is, a metastable state has lifetime of the order of 10 to power minus 8 second, 10 to power minus 5 second, 10 to power minus 3 second, 10 to power minus 10 second. Excited state की जो lifetime होती है that is 10 to power minus 8 second. और हम सब जानते हैं metastable has longer lifetime than excited state, that is 10 to power minus 3 to 10 to power minus 5 seconds. So more close answer is 10 to power minus 3 second is option C. Next question is, presence of metastable state is essential for stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated emission, non-radiative transition. So presence of metastable state is essential for stimulated emission, that is C option is the correct option. Lasing action तभी होगा जब हमारे पास metastable state होगी. So C option is the correct option. Next है, if N1 and N2 be the number of atoms in energy state E1 and E2, E2 is greater than E1, then the condition for inverse population, N1 is equal to N2, N1 is less than N2, N1 is greater than N2, N1 is greater than equal to N2. E1 and E2 are ground state or excited state. E2 is excited state, E2 is higher energy than E1. इनवर्स पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन, मींस पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया, लोअर लेवल से पॉपुलेशन हायर लेवल में ज्यादा हो गई. दैट इज पॉपुलेशन इन हायर लेवल इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन लोअर लेवल. दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. N1 is less than N2. Invert state, that it is population inversion state. Next question is, for creating population inversion, a system must be at least 2 level, 3 level, 4 level, any level.
For creating population inversion, a system must be 3-level system. Next question is, for laser action to occur, the medium must be at least 4 energy level, 2 energy level, 3 energy level. सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है. तो लेजर के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होना चाहिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमारे पास 3 लेवल्स एटलीस्ट एनर्जी लेवल सिस्टम होना चाहिए. सो ऑप्शंस दीज आर करेक्ट ऑप्शन. So next question is, stimulated absorption rate depends on intensity of incident radiation, number of atoms in ground state, both A and B, and none of the above. So stimulated absorption rate depends on the intensity of incident radiation and as well as number of atom in ground energy state. So both option is the correct option, that is C option is the correct, both A and B. Next question is, spontaneous emission rate depends on the number of atom in excited state, the intensity of exciting radiation, the number of atom in ground state, and none of the above. So spontaneous emission rate depends on the number of atom in excited state. So option A is the correct option. Next question is, stimulated emission rate depends on number of atom in excited state, the intensity of external radiation, both A and B, and none of the above. Stimulated emission is also known as induced radiation emission. So it depends on the intensity of external radiation and the number of atom in excited state. So C option is the correct option, that is both A and B. Stimulated emission rate depends on both A and B. Next question is, active medium is that in which can move, in which population inversion is created. Population inversion can be never be created, and which can interact with other medium. So active medium is that medium in which population inversion can be created. So option B is the correct option. Next question is, for light amplification, the responsible mechanism is spontaneous absorption, spontaneous emission, stimulated emission, both B and C. If you remember the full form of laser, so you clear what is the answer for this questions. So stimulated emission is the correct option. C, stimulated emission. Light amplification by stimulated emission of a radiation laser. C option is the correct option. Next question. So here we end this video lecture of laser और MCQs का, और हम नेक्स्ट वीडियो में और MCQs के साथ आएंगे लेजर की. और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा. थैंक यू.